At least 5 people lost their lives and 2 remain missing as a catastrophic flash flood submerged large sections of San Antonio, Texas, on June 12, 2025, in what experts are calling the most intense rainfall event the city has faced in over a decade. Streets turned into raging rivers, with dozens of vehicles submerged or swept away by the swift-moving floodwaters. The sudden deluge overwhelmed drainage systems, forcing the closure of more than 40 roadways across Bexar County. In addition to the flooding, over 30,000 customers experienced power outages as lightning strikes sparked fires and damaged critical infrastructure throughout the city. Stay with me till the end of the report to see the full impact of this disaster. They say turn around, don't drown. Oh my gosh, there's several cars. That's 35. Wow. As the storm intensified before dawn, emergency responders moved quickly through challenging and dangerous conditions. Numerous vehicles were overtaken by floodwaters. Some carried off roads entirely. In one confirmed incident, a man's truck was swept into Beidle Creek. Others were found holding onto trees or stranded on rooftops as water levels rose. Nearly 70 high-water rescues were conducted under difficult circumstances, with strong currents and minimal visibility. 10 individuals were recovered from life-threatening situations. 5 fatalities have been confirmed, including Victor Macias, and search operations continue for 2 others who remain unaccounted for. At daybreak, the full extent of the damage became evident. I-35 and Loop 410 were impassable in several sections, with water overtaking the lower decks near San Pedro Avenue. Dozens of cars were left stranded and traffic came to a standstill. Over 40 roadways across Bexar County were closed due to flooding, some completely underwater. Leon Creek rose more than 13 feet in a matter of hours, exceeding flood stage and inundating nearby residential areas. At the core of the disaster were extreme rainfall rates. San Antonio International Airport measured 6.11 inches of rain, the second highest one-day June total ever recorded for the city, and the most in over 12 years. Surrounding areas, including Helotes and parts of the far west side, recorded more than 7 inches of rainfall in less than 2 hours. The peak intensity reached nearly 4 inches per hour, overwhelming local drainage systems and triggering rapid urban flooding. The storm also brought extensive electrical disruption. Over 11,000 lightning strikes were recorded, contributing to power outages and structure fires. Damaged transformers and fallen trees left more than 30,000 CPS Energy customers without electricity at the height of the storm. As of Thursday afternoon, approximately 16,000 customers, primarily in southwestern Bexar County, remained without power. Repair efforts continue, with crews working through debris-laden terrain and flood-damaged infrastructure. In parts of the city, flooding arrived with little warning. Areas near Navasota and Davis saw rapid water level rises before residents could react. Parks, boat ramps, and parking areas were submerged. In some cases, residents captured images of fish swimming through flooded streets, an indicator of the extent of inundation. Emergency services were inundated with 911 calls throughout the early morning hours. By 8 a.m., first responders had handled over 65 flood-related calls. These ranged from vehicle rescues and home evacuations to electrical fires and water-related traffic collisions. One rescue involved a mother and 2 children who were safely removed from a stalled vehicle just before waters fully surrounded it. Boat units were dispatched to reach individuals stranded in public spaces, including flooded parks.
The National Weather Service issued and extended multiple flash flood warnings through the day. Between 3 and 8 inches of rain fell in localized areas of northeast Medina and western Bezzar counties. नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर हरियाणा पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि थोड़े दिनों के इंतजार के बाद ही हरियाणा के भागों पर व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसके चलते मध्यम से तेज बारिश हो रही है। और एक और अच्छी खबर ये है कि पहला वाला जो सिस्टम बन रहा था, पहले उसका ट्रैक मध्य प्रदेश और गुजरात राजस्थान तक देखा जा रहा था, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचकर फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 15 जून के दिन हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना के भागों पर भी शुष्क मौसम देखे जाने की संभावना है। उत्तरी हरियाणा के इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 16 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जून के दिन ऑल ओवर हरियाणा के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 16 जून के दिन हरियाणा के जो उत्तरी भाग हैं, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, सिरसा, हिसार, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो दक्षिणी हरियाणा के भाग हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना, इन क्षेत्रों पर अभी भी मॉडल के अनुसार 16 जून के दिन मौसम साफ रहेगा। हमारे अनुमान के मुताबिक दोस्तों 16 जून के दिन दक्षिणी हरियाणा के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून निरंतर दक्षिणी हरियाणा की तरफ पहुंचेगा। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जून के दिन हरियाणा के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने के आसार देखने को मिलेंगे। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन कितना बदल सकता है हरियाणा का मौसम और किन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों 17 जून के दिन भी देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी में निरंतर कमी बनी हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होकर गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं। हालांकि जल्दी मौसम में तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा। 17 जून के दिन सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर मौसम साफ रहेगा और बारिश की गतिविधियां रेवाड़ी, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना, इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और जो उत्तरी हरियाणा के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्की नमी वाली हवाएं पहुंच रही, जिसके चलते करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 17 जून के दिन हरियाणा के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून के दिन